Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are back with IPMAT 2026 and we are going to do quantitative sections of 2019. We have picked a few questions of IPM paper from 2019 and we are going to solve those questions and see how we can approach those questions. Okay, now let's start. So basically, what is the first question? So basically, it says suppose A, B, and C are real numbers greater than 1, and what is the value of 1 upon something? So this is what we need to find out. So how I am going to do it? Okay, so just let me pick up the pen and pen color, and then ink color I have to change. Okay, so basically, if you look at all the denominators are very similar. So what I'm going to do, I'm not going to solve all the denominators, I'm going to solve one. So what is one denominator? That is 1 plus log of base of a square b times c upon a. And I'm going to solve this one. So I can write it as log of, so 1 can be written as a square b times, so base is a square b and this is also a square b, and that can be said as log of a square b base a square b c by a. Okay, now I'm going to add it. So when all of you must know the formula that if you have log a plus log b and base is same, so it means it can also be written as log of a into b. So this is what we get. So basically when I have log and base is same, so what I'm going to do, these two numbers, this number and this number are going to be multiplied. So I can say it is going to be log of base of a square b, and these two values are going to be multiplied. So I can say a square b into c upon a. Okay, so this cancels out. So what I am going to get finally, that is log of base abc base a square b. So this is what we have got so far. And if you look at all the values, all the values are in denominators. So basically, if I have a function that is a log function that is log a base b, it can also be written as 1 upon log base b a. So when you take the reciprocal, these two values interchange. So I can also write it as 1 upon log of base abc, and this is going to be a square b. Okay, so am I clear so far? So basically this is what we have used. So basically this number, if I'm taking reciprocal, so basically this number is actually going to be log of base abc a square b. Second number is going to be what? The same thing, log of base abc b square c. Then third number is going to be what? Same thing, base is going to be same, log of base abc, and it is going to be c square a. Now again, in all three numbers, bases are same. So what we can do, we can simply say log of ABC, and it can also be written as all three numbers are going to be multiplied, this multiplied by this multiplied by this. So this can be written as a cube into b cube into c cube. So this can simply be written as 3 times log of ABC base ABC, and this value is going to be 1. So my answer of this question is going to be 3, and this is what we are going to get. So this is the approach of these kind of questions. जुगाड़ वगैरह हम इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं. Definitely should you do the जुगाड़s? I would say if you are comfortable in value putting, then yes, why not? अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करूंगा, then what is the approach that I am going to take? I am simply going to take a is equal to 2, b is equal to I'm simply going to take a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to 8. सारे के सारे 2 की पावर में ले लिए, ये वैल्यूज पुट करके मैं सारे आंसर निकाल लूंगा. So basically, if whenever I get these kind of questions, I am going to take this approach. So this is how these kind of questions should be approached. ठीक है, so value put कर लेंगे, उससे कभी आंसर आपका चेंज नहीं होगा. Now let's move on to the next one. What does it say? So basically, if you understood, it's fine. If you don't understand, kindly do drop a message in the chat box and we'll get back to you. And I have enough time to discuss all the questions. Okay.
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? देयर आर थ्री फ्रेंड्स डिवाइडेड सम एप्पल्स इन द रेशियो ऑफ 3:5:7. सो तीन लोग हैं, ए बी एंड सी, एंड ए के पास कितने एप्पल? 3x, बी हैज 5x एंड सी हैज 7x. ठीक है. सो दिस इज समथिंग, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विद देम. अगर मैं सबको ऐड कर दूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 15x. सो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आर 15x. दैट्स व्हाट आई हैव. आफ्टर कंज्यूमिंग 16 एप्पल्स, इन लोगों ने 16 एप्पल खा लिए, लेकिन ये नहीं बोल रहा किसने कितने खा. ठीक है. इट इज फाउंड आउट दैट the remaining number of apples with them was equal to the largest number of apples received by one of them at the beginning. So initially, who had the largest number of apples? That is C and 7x. So out of 15x, how much you have consumed? You have consumed 16. And how many apples are remaining? That is going to be 7x. So basically, I can say 8x is equal to 16. So x comes out to be 2. So basically, I got everything, whatever was needed. Now, what question is talking about? Total number of apples with these friends. So in जितने भी दोस्त हैं तीनों के पास मिला के, what is the total number of apples we are talking about? That is 15x. And what is 15x? That is 15 into 2, or I would say 30. So सबके पास total 30 apples थे initially. So answer of this question comes out to be 15x, or I would say 30. Okay. So this is how this question should be done. Would I consider this question as easy? Yes. Now this one. Now so mod है, mod में inequality है, and we have a linear equation as well. ठीक है. So सबसे पहले देख लेते हैं what the question is talking about. The question is simply saying कि mod x is less than 100. इसका सिंपल मतलब ये है कि x should be greater than -100 and less than 100. mod y is also less than 100. इसका मतलब सीधे हम ये बोल सकते हैं कि y is greater than -100 and y is less than 100. Okay. So ये अपने पास रेंज आ गई x और y की, and the question is talking about number of solutions. The question is talking about what? Number of solutions. And of what? Of this equation. So basically, I got 4x plus 7y, and that is equal to 3. ठीक है. अब हमको इसके सोल्यूशन चाहिए. सोल्यूशन कैसे आएंगे ये देखना है. सो बेसिकली व्हेनेवर यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट इज द थिंग यू नीड टू डू? The first thing that you are supposed to do is to get the first solution. You don't need to find all the possible solution. Your job is to find one solution, whichever it is. Just find out one solution. And what is that solution? I can clearly see 4 और 7 का difference 3 है, right? So basically I am going to give y is 1, x is equal to -1. ठीक है. So 7 into 1 is 7, 4 into -1 is -4. So 7 minus 4 is going to be 3. So one solution I am getting, that is x equal to -1, y is equal to 1, and that is one solution. ठीक. अब क्या करते हैं? अब जो x का कोएफिशिएंट है, the coefficient of x, that is 4, that gives a change in the value of y, and the coefficient of y, that is 7, that gives the change in value of x. अब अगर दोनों का साइन सेम है तो एक वैल्यू बढ़ेगी, दूसरी वैल्यू कम होगी. ये स्टैंडर्ड रूल है लीनियर इक्वेशन में. दोनों का साइन अपोजिट है तो दोनों वैल्यू बढ़ेंगे या दोनों वैल्यू कम होगी. सो अगर मैं इसको -7 से कम करता हूं, सो दिस बिकम्स -8. तो इसको मुझे 4 से बढ़ाना पड़ेगा, +4. सो दिस बिकम्स 5. दैट इज गोइंग टू बी अनदर सोल्यूशन. इसको वापस से मैं 7 से कम करता हूँ. सो अगर हम चाहें तो इसको रख के देख सकते हैं. इसको 8 इंटू -8 इंटू 4 इज -32. 7 into 5 is 35. दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, अभी भी आ रहा है. Now again next solution is going to be -15, और यहाँ पे क्या होगा? +4. So this becomes 9. So again and it keeps on going. ठीक है. यहाँ पे तो मैंने ऐड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया. अब मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ. यहाँ पे 7 ऐड कर दिया. Then what I'm going to get? I'm going to get 6. अगर यहाँ पे 7 ऐड किया है तो यहाँ पे 4 माइनस करना पड़ेगा. This becomes -3. This is another solution I'm going to get. So if I am talking about solutions, so basically अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चेंजेस बहुत हो रहे हैं. यहाँ पे चेंज बड़ा कहाँ पे? चेंज x में बड़ा, right? So and what is the value of change? That is 7. So I got a series that is the solution of x is going to be -1 plus 7n. ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं, एंड आई नो दैट x शुड बी लाइंग बिटवीन -100 to +100. So I can say 7n would be greater than -99.
and less than 101. So n is going to be greater or equal than minus 14 and less than equal to 14. सो माइनस 14 एंड वाई आई एम टेकिंग क्वालिटी साइन, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग आएगा. सो बेसिकली अब माइनस 14 विल बी एन एक्सेप्टेबल वैल्यू. सो माइनस 14 से माइनस 1 तक मुझे 14 नंबर्स मिलेंगे, 1 से 14 तक 14 नंबर्स मिलेंगे, प्लस एक सोल्यूशन मिलेगा 0. So basically, what are the total possible solutions I am going to get? That is going to be 29. मतलब जितनी वैल्यू x की उतनी वैल्यू अपनी y की. Now the problem is, now you might ask a question कि y पे क्यों नहीं चेक कर रहे? लेकिन क्योंकि y में दिक्कत ये है कि y में 4 का चेंज है, तो y में नंबर ऑफ सोल्यूशन ज्यादा मिलेंगे. So उस केस में क्या होगा कि जब हम y की वैल्यू 100 के पास लेके जाएंगे तो x की वैल्यू 100 को एक्सीड कर चुकी होगी. So that's the reason we are not taking the value of y, we are taking value of x. Okay. Now let's move on to the next one. Assume that all positive numbers have been written down consecutively from left to right. So basically it is written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. उसके बाद 10, 11. और the question is talking about 6, 3, 8, 9th digit. ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? ठीक है. सो सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर देख लेते हैं. 1 to 9 कितने नंबर होते हैं? 9 नंबर्स. 10 to 99 टू डिजिट नंबर्स कितने हैं? दैट इज गोइंग टू बी हाउ मेनी? दैट इज गोइंग टू बी 90. थ्री डिजिट नंबर कितने होंगे? 100 to 999, 900 एंड सो ऑन, जो भी है. Now all these numbers are single digit numbers. So how many digits we are going to use? 9 digits. How many digits how many numbers we have? 90, and every number has 2 digits. So what are the total number of digits we got? 180. यहाँ पे हर नंबर पे कितनी डिजिट होगी? हर नंबर पे 3 डिजिट होगी. सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कम्स आउट टू बी 27. ठीक है. तो व्हेन आई एम राइटिंग 999, हाउ मेनी डिजिट्स आई हैव यूज्ड सो फार? सो सबको ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी 9, देन 8, then 2, then 8. 2, 8, 8, 9 digits have already been used अगर मैं 999 तक सारे नंबर लिख रहा हूं. लेकिन क्वेश्चन ये मुझे जाना तो यहां तक है. नाउ आफ्टर 999 मैं कोई भी नंबर लिखूं वो होगा 4 डिजिट का ही. सो मुझे अभी और कितनी डिजिट लिखनी है? सो दैट आई एम गोइंग टू डू 6389 minus 2889. So यहाँ से क्या आएगा? We are going to get 0, 0. This is going to be 5. This is going to be 3. So 3500 digits I need to write more, and every number contains 4 digits. So how many numbers we are talking about? We are talking about 3500 divided by 4. And that comes out to be 875 digits. Sorry, 875 numbers. हम 999 तक ऑलरेडी लिख चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी रिटन टिल 999. नाउ आई हैव टू राइट 875 numbers more. So which will be the last number? That is going to be 999 plus 875, and that comes out to be 1874. So last number that we are going to write is going to be 1874. और इस नंबर की जो आखिरी डिजिट होगी, दैट इज 4, इज गोइंग टू बी दिस डिजिट. अगर 8th डिजिट पूछी जाती, दैट वुड हैव 7. 87th डिजिट पूछी जाती, दैट वुड हैव बीन 8. 86th डिजिट पूछी जाती, दैट वुड हैव बीन 1. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 4. ओके. Now let's move on to the next one. So basically this is the number of pairs of integers whose sum are equal to their products. Okay, so basically let's say there are two numbers a and b. Summation of a and b is a plus b, and product of them is a into b, and both of them are equal. So let's solve it in such a way so that we understand. क्योंकि इसके अगर देखें तो इसके दो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है. एवरीवन नोस इट, दैट इज 0, 0 and 2, 2. But what if you got some other type of equation? So let's solve. So how do we solve it? So ab minus a minus b, and that's equal to 0. इनको एक साइड लिया है. Now a is common.
I got b minus 1. माइनस 1 कॉमन, अब यहाँ पे b माइनस 1 है तो यहाँ पे भी b माइनस 1 तो होगा. अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम फंस रही है, दैट माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1. प्लस 1 अपने पास है नहीं. So what we are going to do, I am going to add a plus 1 on both sides. So that is going to be 1. Now यहाँ पे our equation becomes a minus 1 into b minus 1 and that's equal to 1. Now it is going to be minus 1 into minus 1 or 1 into 1. So अपने पास टोटल कितने सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे and we can say that product of two numbers is equal to 1. So basically a minus 1 can be equal to minus 1 and b minus 1 is also minus 1. A minus 1 can be equal to 1, b minus 1 can be equal to 1. अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो हम क्या करते, अगर 2 होता तो हम उसको ऐसे लिख लेते कि 1 into 2, 2 into 1, minus 1 into minus 2 and minus 2 into minus 1. In that case we would have had 4 solutions. अगर 1 की जगह 2 होता, लेकिन अब 2 नहीं है, 1 है, तो आंसर अपना यही आएगा. So answer of this question is going to be 2 and a minus 1 is equal to minus 1, so a will be 0. And b minus 1 is minus 1, so b is also 0. And a minus 1 is 1, so a is 2. B minus 1 is 1, so b is also 2. Okay. Now, let's move on to the next one. And what does it say? You have been asked to select a positive integer n that is less than 1000 such that it is either a multiple of 4 or it is a multiple of 6 or an odd multiple of 9. और ऐसे कितने नंबर हैं? ठीक. Now, how many multiples of 4 we have till 1000? So basically, I am just going to make it a Venn diagram. And why? क्योंकि और मैं Venn diagram बनाऊंगा 2 वाला 3 वाला नहीं. क्यों नहीं बनाऊंगा? Because multiple of 4 will always be even, multiple of 6 will always be even, and odd multiple of 9 will never be even. So basically, these numbers are going to have something in common and this is not going to have anything in common क्योंकि ये odd है. ठीक है. So 1000 divided by 4 is 250. So 1000 तक 4 के कितने मल्टीपल होंगे, that is 250. लेकिन 1000 नहीं लेंगे because we are talking about less than 1000. So we are going to have 249 numbers that are multiple of 4. ठीक. 1000 divided by 6 is 166 point something. So basically 166 numbers are there that are multiple. Now there are going to be some numbers that are multiple of both. Multiple of both means multiple of 4 as well as multiple of 6. तो जब हम 4 के multiple count कर रहे हैं तब भी count हुए, जब हम 6 के multiple count कर रहे हैं तब भी count हुए. So basically 4 और 6 का LCM होगा 12. So multiples of 12 will be counted as multiple of 4 as well as multiple of 6. So 12 के multiple चाहिए हमें. So 1000 divided by 12 will give you 83 point something. So 83 multiples are going to be there that are common in both. So this is multiple of 4. This is multiple of 6. And this is multiple of 12. And why multiple of 12 in common? Because ये दोनों का part है. ठीक है. And this is going to be 83. ठीक. Because total sum is 166. Out of 166, this is 83. So this is also going to be 83. So what are the total numbers we are talking about? That is 249 plus this. That is 83. So 249 plus 83, it is going to be 332. So अपने पास 4 के मल्टीपल और 6 के मल्टीपल की बात करें, so we have already got those numbers, that is 332. Now odd multiples of triple or 9. अब ये कैसे निकालेंगे? ठीक है. So basically, I am simply going to do 1000 divided by 9 and that is equal to 111. So 1000 से छोटे 9 के कितने मल्टीपल हैं? 111. ठीक है. So basically, I got 9 into 1, 9 into 2, up to 9 into 111. ये अपने पास टोटल नंबर्स है, राइट. हर दूसरा नंबर जो होगा वो इवन मल्टीपल होगा. सो अगर 110 तक होते तो 102 डिवाइड बाय 2 इज 55. 55 मल्टीपल्स ऑड होते और 55 मल्टीपल्स इवन होते. और लास्ट वाला जो 111th मल्टीपल है वो तो ऑड है. सो हाउ मेनी टोटल ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9 वी आर गोइंग टू गेट? दैट इज गोइंग टू बी 56.
So what are the total multiples? That is going to be 388. So answer of this question will be 388. Everyone understood this question? Yes, no? Because these questions are from IPMAT, and actually they have you will be seeing these questions, similar type of questions in other exams as well. As IPMAT also repeats similar type of questions. So 19 के जो क्वेश्चन है वो आपको 22, 23, 24 में आपको दिखेंगे, not exactly same, along the same lines. So basically, if you do not understand anything, kindly drop a message in the chat box and we'll discuss those questions again. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. Now what does it say? Now the compound interest earned on a certain sum for 2 years is twice the amount of simple interest for 2 years. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ज्यादा सोचना समझना नहीं है इसमें. ठीक है, सिंपल सा अप्रोच लेंगे. तो मैं ये ले रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स रुपीज पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मुझे नहीं पता. मैं सीधे ये ले रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. सो आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपए. सिंपल इंटरेस्ट में प्यारी चीज ये कि हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है. सो सेकेंड ईयर कितना मिलेगा? एक्स प्लस 100 सो 2 साल में जो हमको टोटल इंटरेस्ट मिला है वो हमको मिला है 200 रुपए. सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. आई हैव टेकन 100, यू कैन टेक 1, यू कैन टेक एनी नंबर दैट यू लाइक. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे एक्स ले लिया क्योंकि अगर आप एक्स नहीं लोगे यहाँ पे एज्यूम करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको वेरिएबल माननी पड़ेगी, बट दैट विल बी ट्रिकी. सो इसलिए वो नहीं लेके चल रहे हैं. एंड यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें, सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? पहले साल में आपको इंटरेस्ट तो 100 रुपए ही मिलेगा क्योंकि आफ्टर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर ऑलवेज सेम. ये तो हमेशा होता है. नाउ नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि एक्स रुपीज 100 रुपए जो कैरी हुआ था पिछले साल से, एक्स प्लस 100 वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स पे इंटरेस्ट जनरेट होगा वो कितना होगा? 100 रुपए होगा. अब यहाँ पे जो और यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट जनरेट होगा जो 100 पे होगा. लेट्स कॉल इट आर. ये बात. नाउ दिस टोटल अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ दिस अमाउंट. सो ये अमाउंट 200 है, ये अमाउंट कितना होना चाहिए? 400. इसका मतलब आर शुड बी 200. सो 100 रुपए भी कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ है? दैट इज 200. सो इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 200% होना चाहिए. तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? सीधे ऑप्शन ए. अगर हम इस क्वेश्चन को वैल्यू लेके करेंगे तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा. अगर ये क्वेश्चन हम वैल्यू लेके नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन करने में, इक्वेशन बनाने में इतना टाइम लगेगा एंड इवेंचुअली यू विल फील लाइक गिविंग अप. सो रिमेंबर, so whenever you feel like you can assume a value. so value assumption से चीजें आसान हो जाती हैं. दूसरी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, you need to know which value to assume. यहाँ पे x assume अगर आप करेंगे so that will be trickier और उसमें आंसर नहीं आएगा, उसमें फाइट हो जाएगी. it will take more time. so इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखिए, आपको रिलेशन किस में दिया हुआ है. आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में रिलेशन दिया हुआ है, इसलिए इंटरेस्ट अज्यूम किया है, प्रिंसिपल अज्यूम नहीं किया. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर चाहिए हमको. रिमाइंडर 29 पावर 29 इसका चाहिए. सो बेसिकली वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला दैट a पावर b पावर c इज एक्चुअली इक्वल टू a पावर b इंटू c. ठीक है, सो इसको हम ये लिख सकते हैं 29 पावर 29 into 29 or it can be given as 29 power 841. So basically this is the question और इसको हमें 9 से डिवाइड करना है. ठीक है, सो रिमाइंडर का कंसेप्ट समझ लेते हैं. रिमाइंडर में अगर हम देखें, so basically what is happening, 29 is being multiplied how many times? It is being multiplied 841 times. ठीक है, इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 9 से. ठीक है, when numbers are multiplied, remainders are also multiplied. ये बात आपको पता होनी चाहिए. If you are solving a question of remainder, then the basic principle of remainder says that if numbers are multiplied, then remainders are also multiplied. This is something that you need to remember. ठीक है, so 29 divided by 9 remainder is 2. 29 divided by 9 remainder is 2. यहाँ पे भी remainder क्या है? 2.
So basically I got 2 into 2 into 2 and so on. So overall remainder comes out to be 2 power 841 by 9. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा. अब I am not going to use Euler's theorem or any other theorem, totient function वगैरह I am not going to use. I am just going to do it simply. So 2 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, I am going to get a remainder of 2. 2 square is 4. 4 को 9 से डिवाइड करूं, remainder will be 4. 2 cube is 8. 8 को मैं 9 से डिवाइड करूं, remainder will be 8. 2 power 4 is 16. 16 को मैं 9 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर आएगा 7. एंड 2 power 5 is 32. 32 को उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 5. एंड 2 power 6 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1. सो हमको रिमाइंडर निकालते रहना है. कहां तक? जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए. ठीक है, मुझे ये पता है 2 power 6 पर रिमाइंडर आ रहा है 1. अब मुझे 8 2 power 841 को हमें इस हिसाब से लिखना है कि 2 power 6 के फॉर्म में लिख लें. तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, 2 power 841 कैन एक्चुअली बी रिटन एज 2 power 6 power 140 into 2 power 1. 2 power 6 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 1. 1 power 140 into 2. And this is the final remainder, and that remainder comes out to be 2. So answer will be this. So whenever you get a question of remainder, you can take this approach and you can easily get the answer. If you know the totient function and Euler's theorem, then you can do it a little faster, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम सेव नहीं होता है उसमें भी. इवेंचुअली वो आपको यहाँ पे हमने जो पैटर्न बनाया है कि रिमाइंडर 1 कहाँ पे आ रहा है, वहां पे वो सीधे सीधे आपको बता देगा कि 1 किस पावर पे आएगा. आपको पैटर्न नहीं बनाना पड़ेगा बस. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Now the value of this. So basically this is a similar type of question that we have already done. That was the first question. We have already seen that log a b is actually equal to 1 upon log base b a. ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, so this is actually log base 33. This is 1 upon, sorry, this is 3 and this is 30. This is 4 900 and this is 1 upon log base 5 30. ठीक है, पावर -1. ठीक है, मैं रेसिप्रोकल सीधे सीधे ले लेता हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गेट log base 33 plus log base 900. 900 can be written as 30 square, 2 square, 4 is 2 square, plus 1 upon base 30 base 5. भूमिका, I didn't understand your query. लॉग के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं बेटा. लॉग इज इंपॉर्टेंट एज वेल. सो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज 2 log. सो पावर यहाँ पे फ्रंट में आ जाती है एंड सो बेसिकली दैट बिकम्स 2 बेस 30 स्क्वायर. जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में चली जाती है. सो दिस कैन बी रिटन एज log base 33 प्लस. सो बेसिकली लॉग के क्वेश्चन की सबसे प्यारी चीज ये है कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और आपने 50-60 क्वेश्चन लॉग के प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आपसे लॉग का क्वेश्चन हो जाएगा. लॉग हमेशा आसान होता है. सो लॉग बेस 33 into 2 into 5, again all bases are same and all values are being added. So basically internal values are going to be multiplied, so it is going to be log 30 and 30. So value comes out to be 1. So answer of this question is going to be option 1. So log ke how many questions in IPMAT you should expect from log? I would say at least 2 to 3 questions. 2 तो आपको दिख ही जाएंगे लॉग के क्वेश्चन. मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे. Now let's look at this one. 2 small insects which are x meters apart take u minutes to pass each other when they are flying towards each other. ठीक है, and v minutes when they are flying away in the same direction. ठीक है, the ratio of the speed of slower insect to the faster one. ठीक है, so basically what I can say that this is one insect, this is second insect, let's say this is the faster one and this is the slower one. The distance between them is x
स्पीड ऑफ दिस वन इज ए, स्पीड ऑफ दिस वन इज बी. अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो रिलेटिव स्पीड बिकम्स ए प्लस बी, डिस्टेंस इज एक्स, स्पीड इज ए प्लस बी, एंड टाइम इज यू. ठीक है. If this is going like this is still going like this, then distance covered is x and the relative speed is going to be a minus b because direction is same. So distance is equal to speed into time. अब क्या करेंगे, अब सीधे डिवाइड कर दो, सोचो मत, डिवाइड कर दो. सो आई एम गोइंग टू गेट x अपॉन x, दैट इज 1, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a माइनस b टाइम्स u अपॉन v. सो यहां से हमको मिलेगा a प्लस b अपॉन a माइनस b एंड दैट इज इक्वल टू v अपॉन u. ये हमको आ गया, ये इक्वेशन. अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए b अपॉन a की वैल्यू चाहिए, क्योंकि स्लोअर स्पीड अपॉन फास्टर स्पीड चाहिए. सो वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ b अपॉन. ठीक है. अब हम यहाँ पे जल्दी कैसे कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन इन इन रेशियो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो यूज कर रहे हैं. सो बेसिकली कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो आप उसको a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, c माइनस डी अपॉन c प्लस डी भी लिख सकते हैं. मैं सेम चीज ही कर रहा हूँ. उसको करने से बेनिफिट क्या होगा वो भी देख लेंगे. a प्लस बी माइनस टाइम्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी प्लस a माइनस बी, एंड दैट इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन v माइनस u. सॉरी, v माइनस u अपॉन v प्लस u, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. a तो कट गया, यहाँ पे b भी कट गया. सो आई एम गोइंग टू गेट 2b अपॉन 2a and that is equal to v minus u upon v plus u. So b upon a directly comes out to be v plus u upon v minus u, and that's going to be option C. So this is how we can approach these kind of questions, and this is how we should approach these kind of questions. अगर आपको कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं आता है तो ये करना आपके लिए मुश्किल है. यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे, आपको टाइम लगेगा. ठीक है. सो ये जो चीज है ये आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर. एंड with this, if anyone has any doubt, you can just drop a message and we'll discuss. Thank you.